I'm sharing screen. The practice part. Yeah. Yeah. Guys, here we are going to see pivot tables in today's session. So see here, I have some sales data. We need to, with the sales data, we need to do some data analysis. First of all, understanding this data set, it is having the some 10,000 records. You see here, 10,000 records. So number of columns is some 8 columns, right? So column A is order date, on which date we received the order, what is the sales representative name, which product he or she sold, what is the discount given. If it is not given anything, it is a zero, nothing but blank. But some products, they give the discount as well, 3%, 10%, 2%, and so on. Number of units sold and which region they belongs to, and what is the sales amount, and which month the sales happened. You see that January 1st to 2013, nothing but Jan 13 it is written here. So these are the 8 columns we do have. Now, we have the 10,000 records here. Now your manager is asking that, hey, can you tell me east, west, north, south, all these four regions, net sales is how much? In general, how you do this? Using the pivot table, we are going to do it. But you tell me, in general, how you do this? How do you get the east, west, north, south sales? by using filter option. Absolutely, by using the filter options. Nothing but we go here, we click on this filter, we'll go to data ribbon and click on the filter. We click on this drop down of region, unselect all and select the, let's say, east, click OK. Now east region only records are showing. You see, second row, third row, and 15th row. Why? Where are the other rows? Because they are not east region. As we applied the filter, they are not the east region. So only east region related records are showing. Now you select this records, shift control down arrow. It is selected all of them. So it is showing this 4 crores 38 lakhs 45,000. So same thing we written here, 4 crores 38 lakhs 45,000. After that, hey, after east, I want to know this west or south. I go here, I click OK. Then south region, shift control down arrow. I need to remember this number. If 1 0 also missing, also you're gone. Right? So you cannot do like this manually. Instead of doing this way, how this can be done easily, I'm going to show you now. So Control Shift L, I remove this. So even after you've done this manual work, filter applying one by one for the 4 regions, you return the values here. Then your manager may ask you that, hey, can you show me now sort of like a region-wise sales, representative-wise net sales? Then like again, it is a challenging one, right? So I mean, with the one filter we applied, like here now we need to apply the East region. Who are the sales representative? You need to know. Once you know it, like then only you can apply. Oh, East region 1% you select, and then you select all the sales amount and you write it. So I cannot do this way. Instead, we are going to work with the pivot tables. Pivot tables are pivot tables. How do you pronounce it up to you? But if you want correct pronunciation also, I will show you that. So here you see, I'll write the pivot tables. Whether it's pivot tables or pivot tables, first listen this. Pivot tables. Pivot tables. Pivot tables. So now we got to know how to pronounce. Now, how to work with it, we are going to see now. So be anywhere in this range. This is already table. Table means what? Format as table. As it is a table, you can see the table 1 is a name. If you want to change this name as a something sales data or something, yes, you can do it. You can go here. You can change it as a sales data. Enter. Don't give any space. If you give the space, it won't allow, of course. So that's okay. This table name is sales data. Sales data underscore TV. TV means table. Like this also you can call. It's up to you. So good. So be anywhere in this table. Go to insert ribbon and click on the pivot table. Once you click on the pivot table, it is going to insert the new pivot table. So you see this? It is going to insert a table, nothing but pivot table. From the selected table or range. To insert the pivot table, we need a data set. Correct. The data can be come from the table or from the range. As it is a table, the table name it is taking. If it is a normal range, it would have shown this range as a A12, G10,000, that range it would have shown. But as it is a table, it is showing the table name. So that is okay. Choose where you want this pivot table to be placed. Is it new worksheet or existing? Default one is the new worksheet. I click OK here. So once I click OK, it is inserted a new sheet called sheet 1. So this sheet 1 name I'll rename as a pivot reports. Pivot reports I call. Here is a blank pivot table. Here you see this pivot report or pivot table 1. So instead of this pivot table 1 as a name, I mean like, yeah, there's a pivot table 1. So you can see this right side pivot table fields, order date, sales, rep, product, discount, and so on. These are the header names. And here you see this filters, columns, rows, and values. So what we are going to do is we'll drag this region into, we want region wise sales, correct? So these are the fields, right? Pivot table is all about drag and drop. अगर आपको drag and drop आता है तो pivot table से काम कर सकते हैं. So कैसे करना है? Drag this region into rows. You can see this. All the unique region names are showing. Even though you have the region names thousands of times, it is not showing thousands of times. Once you drag this region into rows, it is showing this unique values. Now, this sales amount, you can drag it into values.
So once I drag the sales amount into values, it is showing the east region sales is this, west region sales is this, south region sales is this. Yeah, north is missing, right? For example, I go here, I'll add one more record. This is a new record I added, right? So that's okay. Now I have added one more record called north. The north should also be shown here. Okay, the north is not showing. What do you need to do? Click anywhere in this pivot table. Anywhere, click karo, right click maro. Like you click on this right click and then use this refresh. Once you click on this refresh, yes, it is refresh and north region 2,50,000 is showing. Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. But can you please repeat once from Sure, start? Shridhar. Thanks. Yeah, we are going to work with many pivot tables. Many pivot tables today we are going to work. So let's see this again. So here. How to insert a pivot table. I go here, click anywhere. I'm showing once again, multiple times I'm going to show you. So click anywhere on this table, be anywhere in this table. There's already table. That is the reason table name is showing, table design it is showing. It is not there, table design, nothing but it is a normal range. Correct. So see here. So in this, I'll go to insert ribbon, click on the pivot table. Just click it. Otherwise, click on the drop down and click on the pivot table from the range. So whichever, directly you can click this. Once you click it, where do you want it is asking. Hey, I want pivot table in the existing worksheet. Where is that existing worksheet? Earlier I said new worksheet, but this time already I have the pivot reports, right? All our pivot reports we are going to insert in the pivot reports. That is the reason I selected this existing reports. First time new worksheet I said. Next time onwards I'm going with the existing worksheet. Which existing? I'll select this pivot reports and let's say I'll select this cell. So you can see that pivot report that is a sheet name and D3 is a cell address. Click OK. Now you see this pivot table 2. Here is a pivot table 2. Every pivot table have its own name. Earlier one is pivot table 1. This one is a pivot table 2. You can see here and also here. Once as it is empty, it is showing here. Once you created some pivot table report like this, it won't show the name here. It will show the output of it. So agar apan ko, I said pivot table is all about drag and drop. So you need to do the drag and drop. How you are going to do the drag and drop? Drag and drop करने से पहले आपको पता चलना है कि आपको क्या होना है. If you don't know what you required, so no one can help you out. So अपन को क्या चाहिए बोले तो, let's say here we'll take this requirement. We want region wise, sales representative wise, sales चाहिए. So if this is the case, I'm going to drag this region. Once I drag the region, it's showing the east, west, north, south. And if I drag the sales rep into rows again, within this east, these are the people. Within the west, these are the people are working and so on. And drag the sales amount into values. So yeah, this is perfect. Like you see here in the north region, there is only one guy like Sash that is showing that value. In the south region, there are some 10 people that is showing those numbers, the 10 or 12 people. So whatever. So it is showing all these numbers. But the only problem here is, I mean, that output is correct. This is a subtotal I call. Like what is the subtotal? If I sum all of them, this is the total. If I sum all these numbers, it is the total, right? The subtotal, region-wise totals. My requirement is what I want to see region in one column, sales rep in another column, and net sales in the third column. That's how it should be. But here it is giving the region name and the sales representative names are showing in the same column itself, and then net sales. So what I required is इसको थोड़ा separate करना है. Region को separate करो और sales rep को separate करो. कैसे करना है? Very simple. Whenever you are in the pivot table, go to design. First go to design, default go to design and report layout बोल के रहता है. Default pivot table कभी भी कौन सा भी pivot table insert करे तो आपको default like compact form में आता है. सब कुछ compact है. So नहीं इसको टेबल फॉर्मेट में लेके आएंगे. शो इन टैबलर फॉर्म बोल के बोलो. टेबल फॉर्म आप टैबलर फॉर्म बोल सकते हैं, क्लासिक फॉर्म भी बोलते हैं. Once I click on this tabular form, it is showing the region in one column, sales rep in the another column. Earlier ऐसा था, रो लेबल्स ऐसा था. मैं टेबल फॉर्मेट को करने के बाद once again I'll do it, go to design and change it to tabular form. It is done here. So it is showing this region name and sales rep nicely. Header names अच्छा बता रहा है. इससे पहले वाले को नहीं करे थे ना, इसलिए रो लेबल बोल के बता रहा है. अगर इसको भी tabular format बोल के करे तो ये रो लेबल्स देखो क्या होता, region बोल के बता रहा है. Now you tell me which one looks good. Is the row labels are showing the proper correct header name? What do you think? Yes, are you there? Tabular form ज़्यादा better लग रहा है. Yes, obviously tabular form. Yeah, so cool. So this is okay, but still there is a doubt here that like ये David कौन सा region वाला है, correct? ये और एक Fernando कौन सा region है? Until unless scroll up, you don't get to know that okay, he is from the west region. ये किनका है? ये ईस्ट रीजन. ये पूरा ब्लैंक्स पूरा ईस्ट से फिल होना है. ये पूरा ब्लैंक्स वेस्ट से फिल होना है. ऐसा फिल होना बोले तो आप ऐसा यहाँ जाके इसको ड्रैग मत करो. आप करे तो भी नहीं होता है. So instead what you need to do is you go to design. In the design report layout already tabular form बोल के करे हैं, करना ही है. उसके बाद after clicking on the tabular form, you click on the repeat all item labels. Once you click on this repeat all item labels, yes, it is repeated. If any case if you don't want to repeat, go here and do not repeat. But I like repeat all item labels. Got it, guys? Yes, sir. Yes. मैं और एक पिवट टेबल बताऊंगा, उसके बाद आपको प्रैक्टिस फाइल देके आपको प्रैक्टिस करो बोलूंगा. Is it clear? Yes, Okay, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So
चलो, let's go here, data. I'll go here. Once again, I'm inserting the pivot table. Go here, click on this pivot table and existing worksheet. Select the sheet. Don't type it. Don't show your typing skills here. So select the sheet name and select the cell address also. Without selecting cell address, if you keep clicking OK, it will throw this error. आप करने से पहले मैं कर रहा हूँ वो error. So you select the sheet and select the cell address. Click OK now. And go here, insert pivot table. Existing worksheet. Go here. Select this address. Click OK. Pivot table 3 inserted हो गया. Now check out this. If I want to see all the products names and the sales here, how it will work, like all the sales rep, I'll just drag the sales rep. There are some 70 sales reps or कितना ही है, सबका नाम बता रहा है, right? Then I'll drag the sales amount. I'll drag the sales amount here. So sales representative by sales amount it is showing. This is good. But problem यहाँ क्या है बोले तो like it is not showing the row labels. It is not showing the sales rep as a header name. It is showing the row labels. कभी भी pivot table insert करते हैं कि default यहाँ चले जाओ, design, report layout, tabular form, click करते हैं कि sales rep बोल के आ गया. Okay, ये आ गया. This is okay. उसके बाद क्या करने वाला है बोले तो you see here, till now we are dragging everything into rows only. What will happen if I drag it into filters? I'll show you. If I drag into filters, this product, one of the field I dragged it into filters, there is a product. By default, it's showing the all. If I click on the drop down, if I select one of the product called quad and click OK, can you see the numbers got changed? Allen Romas 3,44,500 is showing. If I select the flat top, click OK, another product, Allen Romas 1,05,000 and Numerica 49,000. If you want to see multiple items, then select this multiple items. Then whatever you wanted, you can select it. Click OK. You can see this multiple items. Then it is showing the whatever the total of those items. So like this filter works. नहीं मुझे filter नहीं. I want to clear this filter. I go here. You can say this select all and click OK. It is showing for all the products Robin Sharma sales, all the products Allen Thomas sales, and so on. This is okay. Instead of dragging this product into filters, if I drag the same product into columns, क्या होगा देखो. नहीं पहले तो मैं इसको ऐसा पीछे भिजा दे रहा हूँ. यहाँ लेके आया था, यहाँ से नहीं, मुझे जरूरत नहीं है फिल्टर्स में बोल के. I'm removing it. I go here, I remove it. So I just drag and drop it into this place. It will remove. Now, if I drag the same product into the columns, it will give the product names in the column wise. You see this? Aspen, Belen, Carlota, and so on. उन सबका सेल्स बता रहा है. ओ इनका रॉबिन शर्मा का देखो, एस्पेन प्रोडक्ट कुछ भी सेल्स नहीं करा, बेलन भी कुछ भी सेल्स नहीं करा, मगर ओनली ये प्रोडक्ट सेल्स करा है. ये पूरा ब्लैंक है, होगा वॉट. मगर इनका देखो, एलन रॉमस का 2,37,000 बता रहे हैं. ये 2,37,000 मीनिंग क्या है? एलन रॉमस का एस्पेन प्रोडक्ट का सेल्स 2,37,000 है. वैसा रीड करना है आप, वैसा अंडरस्टैंड करना है. पिवट टेबल इज ऑल अबाउट फिल्टर. इट इज अप्लाइड द रो फिल्टर, it is applied this row filter, it is applied the column filter also. So overall it becomes 2,37,000. So if I go right side, 2,93,000, 6,29,500 and so on, like this. It is showing the some 27,44,000. This 27,44,000 it is a grand total, nothing but it is a row total. ये पूरा उनको sum करे तो देखो 27,44,000. But if I scroll down, you can see another grand total which is a column total. Nothing but all the sales representatives. Aspen product sales is this much, 1,59,20,500. So is this clear, guys? Yes, sir. सर स्टार्टिंग में जब इसको क्रिएट कर रहे थे तभी वो एरर क्यों आ रहा था? नहीं, यहाँ मैं कुछ लिखने के लिए ट्राई कर रहा था. ऐसा नहीं यहाँ पे नहीं, फर्स्ट वाले शीट में. फर्स्ट वाले शीट में ऐसा क्रिएट करने के टाइम में इंसर्ट बोला, मैं इंसर्ट पिवट टेबल बोला, एग्जिस्टिंग वर्कशीट बोला. आई सेलेक्टेड द शीट. यू सी दिस, आई डिड नॉट सेलेक्टेड एनी सेल. I need to select the cell also, right? And I'm trying to click OK. Now again it will give the error. You see this, once I click OK, destination reference is not valid. वो बार बार बोलेगा. क्यों बोले तो आप ये शीट बोल रहे हो, ये शीट में कहाँ क्लियरली बोलना है ना. आप इधर को दसरा के लिए लाइक अमेजोन से टीवी मंगाया, मगर लाइक आपके पास बहुत रूम्स है. अगर डिलीवरी बॉय को यहाँ लगाओ बोल के नहीं बोले तो कहाँ लगाता है, उसको मालूम नहीं ना. सेम एक्सेल ऑल्सो. मे बी बैड एग्जाम्पल बट टू मेक यू अंडरस्टैंड आई गिवन दिस. अंडरस्टूड? ओके. Yeah. So this is how it works, guys. Shall I share this file and you practice here? Make your hands dirty with this file. Do practice. I'll go here and drag this file into chat box. I shared it. Try karo. You see this? If I go here, the right side वाला fields बता रहा नहीं. उसको देखना बोले तो राइट क्लिक शो फील्ड लिस्ट बोलो. नहीं मैं क्लोज कर दूँ, मुझे प्लेस वेस्ट हो रहा बोले तो क्लोज करो. फिर आना बोले तो कहाँ तो भी पिवट टेबल में क्लिक करके राइट क्लिक करके शो फील्ड लिस्ट. इट विल शो लाइक दिस. इज इट क्लियर? सॉरी सर, रिपीट करना है क्या? कुछ भी नहीं. लाइक अगर कभी भी आप पिवट टेबल फील्ड लिस्ट को डिफॉल्ट आता है पिवट टेबल इंसर्ट करते कि अगर ये ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद जरूरत नहीं है, ये मेरा प्लेस ले रहा है, मैं इसको क्लोज करना चाह रहा हूँ बोले तो क्लोज करिए, नो प्रॉब्लम. फिर से आना बोले तो वो सेम राइट साइड फील्ड लिस्ट आप पिवट टेबल में कहाँ तो भी क्लिक करके राइट क्लिक कीजिए
show field list बोल के click कीजिए. So that it will show you this pivot field list. Okay. ओके सो एट अ टाइम लिस्ट में से रो में अगर 2-3 डालना है तो भी हम डाल डाल सकते सकते हैं ना, हैं वैसा करे थे ना अपन इससे पहले. देखो हम्म, रोज में रीजन और सेल्स पे करे थे, कॉलम्स में भी कर सकते हैं, फिल्टर्स में भी कर सकते हैं. और लाइक इसमें मुझे 1 सेकंड, आई विल गो हियर, राइट क्लिक इंसर्ट. या इसमें मुझे सेल्स अमाउंट ही नहीं, मुझे यूनिट्स भी चाहिए बोले तो आई ड्रैग दिस यूनिट्स आल्सो हियर. कैन यू सी इसका 220 का मीनिंग क्या है, बोलो समझाओ मुझे. व्हाट डू यू मीन बाय द 220? कितने प्रोडक्ट सेल किए रीजन? टोटल ब्रांड्स के जो भी नेम्स है उसकी या ईच रीजन का at your Francis sales representative, these many units sold. So these many units sold, which product we did not mention. All the products, what are the products he sold? So that product number of units are 220. So उनका पूरा सेल्स का पूरा अमाउंट कितना है? 21,75,000. Okay. So do practice for 5 minutes. I'll be back in 5 minutes.
Yes, done. Okay, cool. Second, let me give option to speak. Is the practice done, guys? Yes, sir. Okay, cool. Now let me show a few more examples now. हेलो Yes, Rahul. सर आपने जो ये इसको बनाया है ये सेकंड थोड़ा राइट साइड लेफ्ट साइड जाइए सर Yeah. जी सर ये जो है ना मिडल वाला अपना रीजन सेल्स रिपोर्ट सेल्स सम ऑफ सेल्स अमाउंट ये सर मैंने बना के प्रिपेयर किया बट ये जो साइड वाला आपने जो बनाया सर वो प्रिपेयर नहीं हो पा रहा है ये वाला नहीं तो ये नो वाला ये third यस वाला यस या सर थर्ड वाला नहीं हो रहा बोले तो कुछ भी नहीं सेल्स रेप को रोज में ट्रैक करो ओके जी प्रोडक्ट्स सर को मैंने कॉलम्स में सर मैं बताओ स्क्रीन शेयर करूं या कर दो जी सर वेट शेयर करो जी सर शेयर कर जी सर दिख रहा है दिख रहा है जी सर एक्सेल एक्सेल बताओ या जी हम्म जी सर इधर मैंने डाला है रीजन और सेल्स बोल के उसमें फिल्टर लगे आप इसलिए दिख रहा नहीं देखो आप लाइक डू वन थिंग या सो हियर आपके ऊपर A3 सेल में जाओ वहाँ फिल्टर लगाया आप A3 सेल में A3 सेल में या A3 सेल रेफरेंस जी सर हाँ वो सेल को सेलेक्ट करो पूरा जी सर रो पूरा रो पूरा नहीं वहाँ फिल्टर दिख रहा है ना फिल्टर को क्लिक करो जी सर क्या ड्रॉप डाउन क्लिक करो दूसरा साउथ और नॉर्थ वेस्ट भी सिलेक्ट करो साउथ और वेस्ट में या साउथ एंड वेस्ट क्लिक हो जी सर सिलेक्ट किया दिख रहा है सब जी सर दिख रहा है सो और भी मेरे जैसा दिखना है बोले तो लाइक फर्स्ट गो टू डिजाइन रिबन व्हाट आई सेड एनी टाइम पिवट टेबल आप इंसर्ट करते कि डिजाइन रिबन में जाना है करेक्ट गो टू डिजाइन रिबन डिजाइन उसमें रिपोर्ट लेआउट नहीं वो नहीं रिपोर्ट थर्ड वाला रिपोर्ट लेआउट ड्रॉप डाउन उसमें टैबलो फॉर्म थर्ड वाला या अब क्या डिफरेंस बता रहा है रीजन पूरा एक कॉलम है सेल्स पूरा और एक कॉलम है करेक्ट 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 सर सो और उसको रिपीट आइटम लेबल्स भी क्लिक करो वो भी रिपीट भी हो जाता है सर रिपीट क्या बोले सर नहीं समझा रिपोर्ट लेआउट में फिर से जाओ अभी तक कहाँ गए थे वहीं जाओ सर रिपोर्ट लेयर में गया उसमें पूरा ऑप्शन सेलेक्ट करो फर्स्ट वाला फोर्थ चार ओके जी सर सिलेक्ट किया फिर से क्लियर करो रिपीट ऑल आइटम लेबल्स बोल के बताते हैं आप पिवट टेबल में रहो पहले सिलेक्ट दिस पिवट टेबल Yeah. anywhere yeah go to report layout and repeat all item labels repeat हो रहा है जी सर Yeah, वैसा करना है ओके जी ओके sure I am sharing my screen now so let's see few more pivot tables guys सर मुझे ये बनाना था सर आपने जो ये बनाया ना ये वाला ये वाला सिंपल वाला है राहुल like you see here I drag the what I dragged where I dragged you see here I dragged the sales rep into rows okay product into columns and sales amount into third that's it नया लिए pivot table insert करो तो इसके लिए अलग से एक पिवट टेबल बनाते हैं राइट हाँ ओके करेक्ट करेक्ट थैंक यू no problem so another pivot table we are going to create guys like go here insert pivot table existing worksheet I'll tell that here in this pivot reports and I'll go to right side I click OK so it is going to create a pivot table here I'll drag the sales rep देखो सब जने जो भी sales reps है unique sales rep names it is showing okay उसके बाद if I drag the product also inside of it will show the products also inside of it and the sales amount okay there's a total sales right so ये देखने के बाद कभी भी डिजाइन रिबन में जाओ रिपोर्ट लेआउट में जाओ टैबलो फॉर्मेट बोल के क्लिक करो और रिपीट आइटम बोले तो और भी अच्छा रहेगा नहीं मुझे प्रोडक्ट यहाँ नहीं यहाँ चाहिए बोले तो ऐसा क्लिक करो सो दैट इट विल शो लाइक दिस नहीं मुझे प्रोडक्ट यहाँ होना है सेल्स रेप यहाँ होना बोले तो ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं मुझे सेल्स रेप यहाँ फिल्टर्स में होना चाहिए तो ऐसा सेलेक्ट करो अब देखो पूरा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स है प्रोडक्ट वाइज सेल्स है लाइक मुझे रीजन भी सेलेक्ट करना बोले तो रीजन को ड्रैग करो रोज में आ गया नहीं मैं प्रोडक्ट को कॉलम्स में चेंज करते बोले तो कॉलम्स में चेंज करें पूरा ड्रैग एंड ड्रॉप में पूरा हो जाता है तो आपको कैसा चाहिए वो पता चलना है कैसा देखना चाहिए उसके हिसाब से हेलो रोज में कॉलम्स में करो हेलो हेलो यस राहुल ये सर सर मैं ना इसमें एक्स्ट्रा पिवट टेबल ऐड नहीं कर पा रहा हूँ I'm middle of the something and you're asking in between how can I stop this and tell you Rahul, like we'll take this query later so already आपका स्क्रीन भी शेयर करे थे अब कुछ भी नहीं वेरी सिंपल है ना मैं करने के टाइम में आप सुन रहे नहीं इसलिए आपको प्रॉब्लम आ रहा कहाँ तो भी एक जगह क्लिक करो इंसर्ट क्लिक ऑन द पिवट टेबल एंड इन द एग्जिस्टिंग वर्कशीट में कहाँ ये शीट में मगर यहाँ सेलेक्ट मत करो ये क्यों बोलते यहाँ ऑलरेडी पिवट टेबल है ना उसलिए राइट साइड जाओ पूरा एम्प्टी प्लेस में जैसे आई विल सेलेक्ट दिस एंड क्लिक ओके सो इट इज इंसर्टेड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा आप करेक्ट सेलेक्ट करें तो ओके ओके सर थैंक यू okay yeah so this is a fifth pivot table so cool now this time I'm going to show you something called slicers and also timeline I'll drag this sales representative into rows
and the sales amount into values. This is okay, but not okay until unless I change it as a tabular format. Yes, this is okay. Now, first thing is this amount, it should not show as a number like this. It should show me the currency symbol. If that is the case, right click, click on the number format. Once you click on number format, go to accounting, and whether you want rupee symbol or American US dollar or Bitcoin, जो भी होना है select करो. मुझे तो rupee चाहिए. I selected that symbol called rupee, and I don't want to show any decimal point. I decrease the decimals, and I click OK. So that it is showing sales representative wise sales amount. So here you see the sales representative wise sales amount. Okay. So this is what it is showing here now. Now यहाँ रुपीस अच्छा दिख रहा है, मगर मुझे खाली सेल्स अमाउंट ही नहीं, उसका एवरेज भी चाहिए. Average. See, Andrew Mayer 45 lakh sales करा है, मगर उनका average sales कितना है? So if you want to find out, drag the sales amount into values, and here also it is showing the same output, that is the sum only. Default, when you drag the number into here values, it will show the sum. Instead of that, you want to change it to average, right? Right click, summarize values by default it is a sum, change it to average, or count, or min, max. So I'll select this average. You see this average number is showing. So average में इतना सारा decimal बता रहा है, अच्छा नहीं है. Right click, number format, formatting I'm doing, accounting, decrease the decimals, click OK. So that it is showing the एवरेज ऑफ सेल्स अमाउंट. इसका अमाउंट 2 बोल के बता रहा है, 2 को निकाल देंगे. हेडर का नाम चेंज कर सकते हैं, मगर ये रॉबिन शर्मा को दूसरा नाम नहीं लिख सकते हैं. So this is a sum, this is a average. So same way you can find out the min, max, count, everything. So this is okay. Now I'm going to show you something called slices here. Understand this carefully. Oh, sorry. This is a pivot report. So see here. If I drag this product into filters, it will show all the products, correct? By default, all. If I select this Aspen product का Allen Thomas का sales इतना है, Aspen product का Allen Thomas का average sales इतना है बोल के बता रहा है. That is okay. If I select one more product, it will show for that product related sales representative wise total sales and also average sales. This is also okay. The thing here is like instead of showing this way, I can also show this filters another way called slicers. So how to insert a slicer in the pivot table is go to pivot table analyze. In this, whenever you are in the pivot table, you will see these two ribbons for show, design और pivot table analyze बोल के दो ribbon बताता है. So ये second ribbon में first pivot table analyze में जाओ और insert slicer बोल के click करो. Once you click on insert slicer, order date, sales rep, product, discount, and so on. It is giving me so many options. I mean, these all the header names it is giving. As we want to apply the filter on the product, select the product. If you want, you can select multiple also. But in this case, I'm selecting only one. Click OK. So that it is showing the slicer here. This is called as a slicer, which will show that this field related unique values. You can see all the unique values. If I select the sunshine, only sunshine related, sales representative wise, sales amount, and also average it is giving. Quad, flat top, or whatever it is based on your selection, it will get changed. Is this clear? If I click on this clear filter, it will show all. If you want to select any one, select that one. If you want to select the multiple, hold the control key. Remember, hold the control key and select this another. Hold the control key and select this another. So that will shows you currently it is applied the filter on this pivot table with the flat top, quad, and sunshine. No, I want to apply like all this clear filter, so that will show it will apply filter for all. Nothing but Robin Sharma ka. So product sales kitna hai? 13,500. So looks like there is only one product. So that is the reason what do you call like sales amount and average amount is the same. Whereas for all other things, sales amount is different and the average is different. So I'll show you one more slicer, guys. I click on this pivot table, analyze. I click on this insert slicer. Once I click on insert slicer, let's say I'll select the region this time. Once I click OK, you can see here this region. Yeah, like you see here. If you want to reduce the size, you can reduce. If I select the east region, west region, north region with only search. South region you'll find many people. West region we find like Alan Ramos, Kushi, David, and so on. So click on the clear filter, it will show all. So one more thing here. This pivot table, I mean, using the slicer, you can connect one pivot table with other pivot table also. This is a one pivot table, this is another pivot table, correct? But you have the option to connect one pivot table other by using the slicer. How to do that? Do right click,
report connections. Currently it is connected to 5th pivot table, but I want to connect it to 4th pivot table. I also want to connect to pivot table 1. It's up to you which one you want to connect. Once you click OK, see this. Currently it is showing some 25 crores, 74 lakhs, something, right? There's a 4th pivot table. So if I click on this quad, you see this, it is showing quad related all the sales. Hey, where is this 4th pivot table? If I go left side, you can see this quad product related region wise sales of the quad related product. Okay. Now if I come back, if I select all, it will show this other people also, other products also. Now if I select this region called West region, this is got updated. This is also got updated, both of them. Oh, this is not getting updated because this pivot table is connected to only this. So you don't see any changes here, right? So you need to connect this one also. How do you do this connection? Do right click, report connection. Once you go here, I want to connect it to pivot table 1 and also pivot table 4. It is already connected to pivot table 5. Now you see this west, north, south. बता रहा है सब clear filter बोले तो सब कुछ आ रहा है. So like this, you can apply the slicers. Guys, is this clear? Assigning the slicer, inserting the slicer to pivot table. समझ Yes, में आया? sir. Yes, sir. Okay, Yes. cool. Yeah, if so, now I'm going to show you something called timeline now. क्या बोलते हैं? Timeline. Pivot table को timeline. ये भी important है. सुनो. So go to pivot table analyze. Just beside the slicer, you will find something called timeline. So once I click on this timeline, you see here insert timeline order date. Oh, timeline तो only date के लिए ही आता है. दूसरा कौन सा भी field को नहीं आता है. Only what do you call, like this will comes only to the like date related. I'll select this order date and click OK. So once I click OK, it is showing all this dates here. 2013 जैन का देखना चाह रहा हूँ. सेलेक्ट करो फरवरी मार्च. नहीं, मुझे जैन से फरवरी तक देखना है. नथिंग बट क्वार्टर 1. सो जैन टू अप्रैल बोले तो जैन टू अप्रैल. numbers are getting updated accordingly. Got it? मगर टाइमलाइन में याद रखो, मुझे फरवरी का होना है, आ रहा है. अप्रैल का चाहिए, आ रहा है. मगर मुझे फरवरी चाहिए, अप्रैल चाहिए, मार्च नको बोले तो नहीं होता है. क्यों बोलते टाइमलाइन कंटिन्यू सीरीज है. इसको होल्ड कंट्रोल करके इसको सेलेक्ट करते बोले तो नहीं होता है. But whereas if I select all, yeah, whereas here I selected the quad and hold the control key and select the sunset. Yes, it is possible. Non-continuous range also can select in the slicer, but in the timeline it should be continuous, whatever the range you select. And you have the more options. If I click on drop down, I select the years. You see this 2013, 14, 15 like this. If I select the 13, yes, it is showing the 13 related numbers. 14 and 15. Oh, 15 का कुछ भी data नहीं है. So clear filter, it will show all. Again, I'll go back. Click on the drop down here, and you can change it to days as well, quarters as well. If you select the quarters, quarter 1, quarter 3, quarter 4, like this, you can select or multiple quarters also. See this, from this quarter to this quarter, I select. Click on clear filter, it will show all. But I like this default one months. Nothing but within the year, that month it will show. So using this timeline also, you can connect one pivot table with the other pivot table. How do you connect? One more time, third time I'm showing you. Same as a slicer, just right click karo, report connections. So currently it is connected to 5th pivot table. If I select the 4th pivot table and 3rd pivot table, click OK. Now you see here, if I select this got changed and this also. If I update this one, yes, just this got updated. So clear filter, it will show clear filter. So understood this, guys? सर Yes, बोलो, Gauri. सर एक ही सेम ही डेटा से हमने डिफरेंट पार्ट टेबल जो क्रिएट किए, इसीलिए रिजल्ट ठीक से शो हो रहा है. अगर डिफरेंट डाटा That's a good question. So you can connect one pivot table with other pivot table only if both the data source of these pivot tables are same. If the data source are not same, you cannot connect one pivot table with other pivot table by using the slicer, by using the timeline. समझ में आया गौरी? यस सर. थैंक यू. Better. Yeah. और कुछ बोल रहे थे कोई? Was that? Okay. If no question, do one thing. Yeah. Yeah, you take a 10 minutes break. In the 10 minutes break, whether you really take a break or 10 minutes like you do practice, it's up to you. After 10 minutes, we'll catch up so that like we'll move on with another topic. Okay.
Yeah, guys. So let's see. Put few more examples of the pivot table. Here, I have this data set, right? Like I'm going to insert the last pivot table. Click anywhere in this pivot table. Insert pivot table and existing worksheet. Location is, as usual, it's the same sheet. And I'll select somewhere right side here and click OK. So it is inserted the sixth pivot table, right? So if I drag this order date into rows, dates I dragged and the sales amount into values. If you select enable the checkbox also, it will come to values only because number will be always comes to by default values. You see this? I selected the order date into rows, which is showing the year, quarters, months, order date, nothing but this group. So if you don't want to see the grouping, I mean, if you want to expand this, you can expand this. So it is showing the quarters. If you expand more, it will show this month. If you expand more, it will show the days. Agree? So like this, you can do the grouping. I mean, it is already grouped. You can expand them. No, I did not like this. I want to see some other way. Do right click, ungroup. You click on this ungroup, not ungroup, sorry. You click on the group itself, but you do the grouping as per your wish. So I don't like the year quarters. I unselected this. Now I selected the years and months only. Nothing but year wise, month wise sales it will show. So I click OK. You see this years are there and within that months. But years should be in one column, month should be in another column. In that case, again go back to design, report layout, change it to tabular form, and click on the repeat all item labels so that it is repeated. So like this, you can do the grouping as well. So you go here, like in the grand totals. If you don't want to show this grand totals, go here. Do not show all for rows and columns. It is not showing. If you don't want to show the subtotals also, go here, subtotals. Do not show subtotals. If you want it back, go here. Show all subtotals at the bottom of the group. And the grand total also I don't want to show. Right now, grand total is not showing. On for rows and columns, so that like a column wise it's showing. If you have more rows, it would have shown that row wise total also. So like this, you can do the modification. I said this is the last pivot table, but it is not really. So instead, I'll show you this last pivot table in another new sheet. I go here, data. This is our last pivot table. Check out, insert pivot table. I'll go with the new worksheet. Click OK. It is inserted a new sheet called sheet 2. Instead of sheet 2, I'll call it as a master pivot. Any name you can give. I'm dragging this product into rows and the sales amount into values. Now the sales representative into filters. So this is a simple pivot table only, right? We already discussed this. So I'll go to design, report layout, always change it to tabular form. This is okay. Magar, the way I want is, what management is asking is, you show me product wise sales amount. Product wise sales amount should show where this product wise sales amount should be shown. But the way it should show is not all sales rep. It should show each sales representative. For example, if I select the Alan Thomas, only Alan Thomas related product wise sales in the one sheet. The sheet name should be Alan Thomas. Next sheet should be, for example, Andrew Mayer. Sheet name should be Andrew Mayer, and it should show Andrew Mayer related product wise sales. Like this, if there are 100 sales representative, 100 sheets needs to be created. That's what they are asking for. So if this is the case, if to insert one pivot table, let's assume 1 minute it took. So for inserting the 100 sheets for the 100 sales representative, 100 pivot tables in 100 new sheets, and the sheet name should be renamed, 100 minutes minimum it will take. So that much time to apne paas nahi hai. So we require very quick. In that case, we can create this way. The way I'm going to show you, see this. So see this, I'm going to do that magic here. Check out. So when I use the word called magic, my kids also were so much interested. And hey, what is up, magic dad? And they are sitting beside to me. I don't know how far they'll understand. So see this now. So here you see product wise sales we have, but it is showing for the all the sales representative, like Alan Ramos, Robin Sharma, and so on. But I mean, if I select this one person, it is showing for only that person related one. So we don't want to see one by one. I mean, like we need to see each sheet. Multiple sheets should be created. Right now there are only 4 sheets. Now we need to create the multiple sheets. So if this is the case, how this needs to be done is you click anywhere, be anywhere in this pivot table. One last thing I'll do is like I'm going to apply some formatting also. Do right click, number format, accounting, no decimals, click OK. Yeah. So this is ready now. Master pivot table is ready. You just go to pivot table analyze, click on this drop down of the options and show report filter pages. Once I click it, you see this sales rep is showing nothing but it is in the filters. Once you click OK here now, you see this, it is going to create the multiple sheets. You see the flickering is happening. So that's the magic happened. Now you see this, Alan Thomas, the sheet is created, product wise sales. The next one is Andrew Mayer, Ashley Francis, and so on. You can see that multiple sheets have been created very quick. Understood this?
Yes, sir. Any queries, guys? Anyone? सर एक बार रिपीट कर दो ना सर, ये फास्ट जा रहे हो। थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ। ओके वो फास्ट बनाया, मैं फास्ट नहीं गया। सो उसको तो स्लो नहीं कर सकते, और जो बना रहा था फाइन, नो प्रॉब्लम। आई डिलीटेड ऑल द शीट्स, आई एम क्रिएटिंग वंस अगेन। See this, guys, once again, just created the pivot table, product by sales amount and the sales rep here. Remember that, like, there should be something in the filters, otherwise it won't work. So whatever is there on, based on that, like, you can create a pivot tables, multiple pivot tables. So go to pivot table analyze, click on the drop down, click on the show report filter pages, and as here is the filters में अपने पास sales rep है ना, उसी के sales rep बोल के बता रहे हैं। अगर multiple है तो multiple बता देता। So you select the sales rep and click OK. You see this, right now there are only 4 sheets. Once I click OK, it is creating that multiple sheets now. तो रॉबिन शर्मा का एक ही प्रोडक्ट सेल्स करा, उसलिए एक ही है। एलन थॉमस का देखो मल्टीपल है। रॉबिन शर्मा का एक ही है ना, उसको क्या करेंगे बोले तो आई गो टू डेटा सेट, आई ऐड वन मोर रिकॉर्ड, इसको रॉबिन शर्मा बोल के बोल देंगे। रॉबिन शर्मा को और प्रोडक्ट बोलते हैं सम 2,50,000 व्हाटएवर। इफ आई कम टू दिस रॉबिन शर्मा, इट इज स्टिल शोइंग ओनली वन प्रोडक्ट बट नॉट द अनदर प्रोडक्ट कॉल्ड क्वाड। इसको क्या करेंगे, यहाँ आके रिफ्रेश करेंगे। ये टेबल को आके रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है, दूसरा कौन सा तो भी पिवट टेबल में जाओ, राइट क्लिक करो, रिफ्रेश मारो। So even you refresh this another pivot table, this also get refreshed. Now you see this quad also it is showing as 2,50,000. Is that clear? Because all these pivot tables are created from the same data source. So when you click on refresh, it will refresh all of them. Yeah. So that's fine. Guys, did you understand this? Yes, sir. Yes, sir. So ये yes, सीट sir. शेयर कर देते। ये शीट नहीं बोलना है प्रशांत, लास्ट क्लास को आ गया, अभी भी शीट बोल रहे हैं, इसको वर्कबुक बोलता है। हाँ सॉरी सर। वर्कबुक में शीट्स रहते हैं। ओके ओके। so I'll share this file, no problem. Our workbook, I'll share this. So close this. Yeah, एक और एक बताता हूँ, इनसे डेटा सेट में जाएंगे। यहाँ डेटा सेट होना, like let's say I click on the recommended controls, recommended chats. We can create a chats also. Once I click on recommended chats with this data set, recommendations are not available for the data you selected. To choose a chat type, what you need to do, it is saying here, because pivot chats need to be created on the summarized data, not on the thousands of records. Remember that. So पहले इससे pivot table create करेंगे, उसके बाद pivot chat create करेंगे. So click on this recommended pivot tables. So once I click on recommended pivot tables, hey, it is showing this AI. It is actually recommended pivot tables. What do you want? Average discount by region, or like this one, or like average discount by product, or something else. There are so many options are there. You can select whichever you like it and click OK. It is inserted in the new sheet. अब देखो कुछ भी मैं drag and drop कुछ भी नहीं करा, region, sales rep, unit, sales amount सब उन्होंने drag कर लिया है. This is called as a recommended pivot table. But I really don't recommend this because we know how to drag and drop. So we know how to create it. So इतना drag and drop अपन भी कर सकते हैं ना, उसको भी पूछना क्यों नहीं कर सकते हैं. But ये option है, देख लो एक बार. You click anywhere, set recommended pivot table बोल के है. Okay. One more time, I click on this recommended pivot table. From here, region wise, let's say average discount. Discount को पकड़ रहा है. Yeah, and go with this sales amount. I click OK. It is inserted another pivot table. यहाँ कुछ आर्ची फ्रांसिस को 21,75,000 है. ये कैसे आया मुझे डिटेल से बताओ, बोल के कोई भी पूछे तो इसको डबल क्लिक करो. once you double click, it is inserted a new sheet. Only आर्ची फ्रांसिस का ईस्ट रीजन का टोटल सेल्स बता रहा है. Only those records, such records are 82 and such amount is 21,75,000. कोई भी पूछे तो भी ये देखो यहाँ ऐसा इसके हिसाब से 21,75,000 है बोल के बता सकते हैं. One second, I'm showing, just double click anywhere so that it will shows you that particular records. Clear? Now we'll talk about Power Query. See, yes, I'll go with the one example called split data. Let me open this file. अगर आपके पास ऐसा है डेटा, इसको क्या करना है बोलते, प्रॉपर केस करना है, डुप्लीकेट भी रिमूव करना है. विराट कोहली अपन को कितना भी पसंद होने दो, मगर इतने पर नहीं आना है, ओनली यूनिक वैल्यूज रहना है. यहाँ पे देखो कटरीना कैफ बहुत बार आई है, एंड सो ऑन. सो व्हाट यू रिक्वायर, यू वांट टू शो प्रॉपर केस नेम्स. That name should not have any duplicates, and this data also should be in split. Means what? Virat Kohli should show Virat Kohli here, and beside to it Virat here and Kohli here. If it is a Mahendra Singh Dhoni, Mahendra Singh Dhoni, it should show Mahendra Singh and Dhoni.
will Sachin Ramesh Tendulkar, Sachin Ramesh Tendulkar, and Katrina Kaif, Katrina and Kaif. Like this, it should show. Got it, guys? Is the requirement clear? So yeah. Guys, कैसा करते हैं आप? पहले बोलो, मैं उसके बाद बात करता हूँ. फॉर्मूला लगाते हैं. कौन सा मामला लगाते हैं पूजा? प्रॉपर केस. ओके, देयर इज अ प्रॉपर फॉर्मूला है, कर सकते हैं. ओके, उसके बाद स्प्लिट भी करना है ना, उसके बाद रिमूव डुप्लीकेट भी करना है ना, बहुत कुछ काम है. इतना कुछ करने के लिए फॉर्मूला से कर सकते हैं, मगर थोड़ा मुश्किल है. सो इंस्टेड ऑफ दैट आई विल शो यू वेरी वंडरफुल फीचर गाइस, दैट इज कॉल्ड पावर क्वेरी. आप ये दो पावर क्वेरी मैं जो बोलने वाला हूँ ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. अच्छा सुनो. सो यू गो एनीवेयर इन दिस रेंज. मुझे ये डेटा में फाइल्स को 1 सेकंड. सो यहाँ डेटा है ना, ये ऑलरेडी टेबल है, इसलिए टेबल 1 बोल के बता रहा है. दैट्स ओके. गो टू डेटा रिबन, क्लिक ऑन हियर गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा बोल के दिख रहा है ना, उसमें जाओ. डेटा रिबन में गेट एंड ट्रांसफॉर्म में फ्रॉम टेबल आर रेंज को क्लिक करो. जस्ट क्लिक ऑन द फ्रॉम टेबल आर रेंज. वंस यू क्लिक ऑन फ्रॉम टेबल आर रेंज, in this Power Query editor, some new window it is coming, that is a Power Query editor, right? So in this Power Query editor, you can see this, it is showing all those records. So employee name, all those names are here. We need to remove the duplicates, correct? So very simplest way I'll show you. Just आपको right click आया तो इसे काम कर सकते हैं. किनको भी right click नहीं आया तो मुझे बोल दो. And I'm kidding. So all of you are aware about the right click, correct? So just do right click. Once you right click on this header के ऊपर रह के right click करो. उसके बाद देखो copy बोल के remove duplicates. So you see here, and do right click like remove other column. So many options are showing. In this, I'll go to transform. In this uppercase, lowercase, capitalize each word, nothing but proper case. Once I click on this capitalize each word, यहाँ देखो ठीक तरीके से विराट कोहली पूरा लोअर केस में है, मगर मैं ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज ईच वर्ड बोलते कि देखो प्रॉपर केस में आ गया सब कुछ, इंक्लूडिंग वीएस लक्ष्मण एवरीवन. दैट इज कूल. प्रॉपर केस में तो आ गया. अब भी करा. सो एक्शन क्या है, मैं कैपिटलाइज ईच वर्ड ना, वही एक्शन यहाँ लिख रहा हो. ये फर्स्ट 2 स्टेप्स खाली डेटा को लेके आना है, वो ऑटोमेटिक वही लेके आता है. यहाँ से देखो थर्ड स्टेप से अब जो भी कर रहे हैं ना, वो पूरा स्टेप्स अप्लाइड स्टेप जैसा लिख लेता है. बोले तो ये वो रिमेंबर, वो याद रख लेता है आप क्या करें बोल के. आपका स्टेप जो भी करे ना, वो सब पूरा स्टेप्स लिख लेता है. यहाँ अपन बोलते हैं ना, लाइक आप कुछ भी गलत करें तो चित्र पे लिख लेता है गुड और बैड. सो उन्हें लिखता है नहीं लिखता नहीं मालूम, मगर यहाँ तो ये लिख लेता है आप जो भी करते हैं. सो डू राइट क्लिक अगेन and click on the duplicate column. Once you click on the duplicate column, same column got duplicated here. Same column got duplicated here, and it is showing as like this column got duplicated here. Same column got duplicated, right? So it is showing the employee name copy. So इसको क्या करना है, पहले कॉलम को तो ऐसे ही रखो कि बोलते हो डेटा what you call like full name चाहिए अपन को, ऐसा रखे. इसको डुप्लीकेट्स निकाल, I mean split करना है डेटा को. Right click, split column by delimiter. Once I click on by delimiter, how do you want to split this? It is asking split column by delimiter, split or enter the delimiter. So select enter the delimiter, nothing but you select it. Is it a colon, space or whatever? It is already selected as a space as a delimiter. Yes, it is correct. If any case if it is selected incorrect one, you can select whichever is a delimiter. Delimiter means what? It will separate one word with the other word. Virat Kohli, Virat space Kohli. Virat is the first word, Kohli is another word, right? So space is separating. If it is underscore, we would have selected underscore. If none of them standard options, then you go to custom and select the underscore. ऐसा कर सकते हैं. मगर in this case, it is a space. So how do you want to split this data? लेफ्ट मोस्ट डिलिमिटर है, राइट मोस्ट डिलिमिटर है, और ईच अकरेंस ऑफ डिलिमिटर बोल के भी है. अभी देखो बाय डिफॉल्ट ईच अकरेंस ऑफ डिलिमिटर है. उसका मतलब क्या है बोले तो सचिन रमेश तेंदुलकर को वो सचिन को एक कॉलम में लगाएगा, रमेश को नेक्स्ट कॉलम एंड तेंदुलकर को थर्ड कॉलम, ऐसा रखेगा. सो दैट इज ईच अकरेंस ऑफ डिलिमिटर. अगर वो लेफ्ट मोस्ट डिलिमिटर है तो क्या होगा बोले तो कैन एनीवन गेस फॉर सचिन रमेश तेंदुलकर इफ आई सेलेक्ट द लेफ्ट मोस्ट डिलिमिटर व्हाट विल बी द आउटपुट, हाउ मेनी कॉलम्स इट इज गोइंग टू स्प्लिट एंड व्हाट विल बी द आउटपुट फॉर द सचिन रमेश तेंदुलकर. सचिन रमेश को एक कॉलम में रखेंगे और तेंदुलकर को नेक्स्ट कॉलम में. लेफ्ट मोस्ट पूछ रहा हूँ मैं, आप राइट मोस्ट का आंसर बताया एक्चुअली. सो सचिन को एक कॉलम में लगेगा, रमेश तेंदुलकर को और एक कॉलम. अगर राइट मोस्ट डिलिमिटर बोले तो आप जो बोले थे ना वो. सो इफ इज राइट मोस्ट डिलिमिटर सचिन रमेश विल बी इन वन कॉलम, तेंदुलकर इन अनदर कॉलम. गिव इट राइट. लेट मी सेलेक्ट दिस लेफ्ट मोस्ट डिलिमिटर एंड क्लिक ओके. यू कैन सी दिस सचिन इन वन कॉलम, रमेश तेंदुलकर इन अनदर कॉलम. हे नो आई डोंट वांट टू स्प्लिट दिस वे. आई डिड व्हाटएवर आई डिड, आई वांट टू गो बैक. नॉर्मली कंट्रोल जेड क्लिक करते एक्सेल में, यहाँ पावर क्वेरी में ये क्लोज बटन क्लिक करो. ये स्प्लिट जो भी कराओ ना उसको क्लोज कर रहा हूँ. फिर से करता हूँ मैं. राइट क्लिक, स्प्लिट कॉलम बाय डिलिमिटर, each occurrence of the delimiter, space is my delimiter, click OK. Now you can see that Sachin Ramesh Tendulkar. हेडर का नाम आपको चेंज करना है बोले तो उसको चेंज कर दो. ओके,
क्या करेंगे कुछ नहीं, जस्ट डबल क्लिक एंड रीनेम, डबल क्लिक हियर एंड रीनेम, अदरवाइज राइट क्लिक एंड रीनेम भी दिख जाता है आपको, ऐसा भी कर सकते हैं। सो वंस यू आर डन विद ऑल द चेंजेस, जस्ट गो टू होम रिबन, याद रखो होम रिबन में रहो, क्लिक ऑन दिस क्लोज एंड लोड। क्लोज एंड लोड बोल तो क्या है, क्लोज दिस पावर क्वेरी एडिटर, आपको हेल्प करने के लिए आया है, इसको क्लोज कर देना है पूरा हेल्प लेने के बाद। सो क्लिक ऑन दिस क्लोज एंड लोड। सो वंस यू क्लिक ऑन दिस क्लोज एंड लोड, इट इज लोडेड द डेटा इनटू टेबल 1 इन द न्यू शीट। टेबल 1 बोल रहा है इसका आउटपुट यहाँ आया है। इज दिस क्लियर गाइस? यस सर। Now I'll go back to data 1. I'll add another name. जय का नाम लिखा और एक नाम लिखा, उसका भी डुप्लीकेट ले लेंगे और एक नाम लिखेंगे लाइक, सो ये भी डुप्लीकेट रह सकता है, नहीं तो नहीं भी। सो अगर मैं टेबल 1 को गए तो ये जय, शीतल, प्रशांत यहाँ टेबल 1 में आते नहीं आते? व्हाट डू यू थिंक? डू यू एक्सपेक्ट देम और नॉट इन द टेबल 1, आई मीन इन द शीट? No, sir. Okay. If I go here, I scroll down, oh, it is not showing, up to Deepika only it is showing. So that means that as the source data, I call this as source data, this is output data. Instead of table 1, I can call it as a output 1. आउटपुट 1 कहाँ से आ रहा है? डेटा 1 से आ रहा है। ओके, आउटपुट 1 वो तो बता रहा ही नहीं, और मैं क्या करूँ, राइट क्लिक, रिफ्रेश। वंस यू डू दैट, यस यू कैन सी दैट ये बता रहा है। ओ मैं एक बात भूल गया था, ये डुप्लीकेट्स है, डुप्लीकेट्स को रिमूव करना भूल गया हूँ मैं। सो दैट्स माय बैड, नॉट अ प्रॉब्लम। व्हाट यू कैन डू, यू सी दिस नेम्स आर शोइंग, न्यूली एडेड नेम्स आल्सो शोइंग, बट देयर आर मेनी डुप्लीकेट्स। विराट कोहली भी ऐसा ही है, देखो बहुत डुप्लीकेट्स है, राइट। इनको टिक करना बोले तो ये ऑलरेडी पावर क्वेरी जो भी क्रिएट करे ना वो राइट साइड में है, उसको डबल क्लिक करो, वो क्लोज एंड लोड करे तो लोड क्लोज हो गया था, फिर से ओपन करे। अब मैं क्या करूँ बोले तो इसको एम्प्लॉय नेम को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके ये पूरा स्टेप्स करे अपन। नाउ विल गो हियर, रिमूव डुप्लीकेट्स बोलता हूँ। What is that? Remove duplicates. Once I click on remove duplicates, it is removed many duplicates and it is showing only 26 records now. Click on this close and load. It will load it in the same output one like this. There are no duplicates now. If you still have any doubt, once again you go and you write another name. I written this. Kajal का नाम एक 10 बार लिखेंगे. So if I go here, Kajal is not here. What do you need to do? Refresh. Refresh. How do you refresh? यहाँ से रिफ्रेश कर सकते हैं, नहीं तो क्वेरीज एंड कनेक्शन में यहाँ भी रिफ्रेश बोल के है, इसको भी क्लिक करे तो रिफ्रेश हो जाता है। देखो काजल भी आ गई। अंडरस्टूड दिस? यही सेम थिंग आपको नॉर्मली फॉर्मूला से करना बोले तो डायनामिकली ऐसा बहुत टाइम लगता था, मगर ये बहुत इजी वाला है पावर क्वेरी। हेलो सर। हेलो यस प्रतीक। सर, क्वेरीज की नई विंडो ओपन कैसे हुई है बता सकते हो क्या सर? एक बार कुछ भी नहीं, क्वेरीज एंड कनेक्शन बोल के है ना, ये डबल क्लिक कीजिए। नहीं, ये अगर बाय मिस्टेक अगर क्लोज भी कर लिया तो डेटा रिबन में जाओ, क्वेरीज एंड कनेक्शन क्लिक करो, डेटा रिबन में क्वेरीज एंड कनेक्शंस। अंडरस्टूड? आई विल शो यू अनदर एग्जांपल गाइस। इसमें ही और एक है। हाँ लास्ट टाइम कोई की पूछे थे हम, ये बैच में, दूसरे बैच में, यस दूसरा। हाँ यहाँ देखो, नाम है, आई मीन नंबर है, नंबर नथिंग बट टॉप 10 रिचेस्ट पीपल का नंबर है और उनका नाम भी है। सो शोइंग देयर रैंकिंग एंड देयर नंबर इन द सेम कॉलम इज नॉट अ गुड आइडिया। वी वांट टू शो इट सेपरेटली। हाउ डू यू सेपरेट इट? How do you separate this? I'll go to data, click on this from table or range. So once you click on it, you can see this, I mean table 3 showing. Table 1 क्या है, अपन इससे पहले जो भी करे थे ना पूरा, so that's okay, this is table 3. So इसको क्या करेंगे, right click, duplicate this, same column is duplicated just for your reference. I do right click, split column, there is option called digit to non-digit. Once I click on digit to non-digit, all the digits in one column, non-digits in another column. Go here, double click, इसको change करो, rank बोल के बोलो, and यहाँ नाम, and done. Click on this close and load so that the data will be loaded in the another sheet. There you go. All right. Close this. Now I have the data this time in the this is a PDF file actually. This is a PDF file. I want to analyze this data. I have this data set, rank, name, total net worth, and so on. If I scroll down, it is showing the top 500. This is the 16 pages PDF. ये PDF file है. So top 500 people का, like richest people का, उनका net worth कितना है, उनका 2021 का डेटा है ये। So 2020 में कितना था उनका, 2020 से कंपेयर करो तो इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, वो सब बोल रहा है। Okay, so this is the one, like if you need to know what is the total net worth of all this 500 top 500 people, if you want to know, so yes, that can be done. So how to know that, like how this needs to be calculated, I'll tell you.
how this data analysis needs to be done. I'll show you now. So see this, guys. If I try to copy this data and paste it in Excel, it is very difficult. You cannot do the copy paste also. You see this control C I did. If I go to Excel, if I open the new Excel file, see here, if I paste it, oh, it is pasting everything in the one cell itself. Correct? Like everything in the one cell like this is showing, you know, ऐसा तो कुछ भी नहीं कर सकता हूँ मैं, I can't delete. So instead, what you do, there's a new workbook, correct? ये workbook में अपन को PDF का data पूरा यहाँ लेके आना है. So how do you get all that data into from PDF to here? I'll show you. Simple step, go to data ribbon, get data from table नहीं है. This is not a table, there is no data, so you cannot click on this. So you need to get data from the website. No, it is not a website. It is not a text file. It is not a picture also. So get data, click karo from file, from PDF. Once you click on from PDF, where is the PDF file? It will ask you. So I'll go here. I'll tell that this is the path. I'm giving the path word. Enter in this path. This is the file. I'll just double click on it. So it is connecting to that PDF. Now the navigator is showing here is a page 1 data set. Right? Page 2, page 3. एक ना को already Power Query दे रहा है table 1, which is consist of page 1 to 16. Click on this transform data. Once you click on the transform data, it is showing this Power Query editor. ये table का नाम table 001 page 1 to 16 अच्छा नहीं दिख रहा है. आपको change करना है बोले तो ऐसा डबल क्लिक करके यहाँ change करो, नहीं तो राइट साइड में आके यहाँ भी change कर सकते हैं. Both are same. I'll call it as a top 500 billionaire. B will click on nothing but billionaire simple. So if I click on this close and load, directly this data will be loaded into new sheet. Sheet 1 already empty है. Sheet 1 already empty है. इसको close and load बोले तो उसमें नया sheet में insert होता है. Instead of in the new sheet, in the sheet 1 only should insert. बोले तो क्या करो? Instead of directly clicking on the close and load, click on the drop down, click on the close and load to. First one बोले तो वो नया sheet में insert करता है. नहीं, close and load to बोले तो आपको option देता है. Import the data as a table in the existing worksheet. In the existing worksheet which cell by default A1 it will take, but if you don't like A1, if you want here, you can select it. And I'll go with the A1 only. I click OK. So that the data is loading here now. So पूरा data तो पूरा 500 जनों का सब आ गया. Now you need to know the sum of it. So इन सबका sum करें तो कितना हो रहा है बोल के. I write in the simple sum equal to sum of all of them enter. Oh, ये तो करोड़ों रुपए है, billions of rupees, not rupees, dollars. Still it is showing the zero. How come? Why it is showing the zero, guys? I did the sum, right? Why it is showing the zero? Format के कारण. Sorry? Because of the format to this. Yeah, this is a text one. This data is look like a I mean this is a text. You see here, this is a dollar is there. Literally the dollar is sitting in this, and there is a B. So this should not be alphanumeric. It should be pure number. Then only you can sum. Correct. See, for example, someone written their salary as a 50K and another salary is a 90K. Sorry, 90K. And if you're trying to sum this number, sum of this 50K plus 90K, it won't have 140K, which is zero because it is a text. Correct. Same problem यहाँ भी. So we need to remove this B, we need to remove this dollar. So इसको क्या करेंगे बोले तो I'll double click on it. We'll already load it from PDF to here. I'll double click on it. Nothing but we'll open the same Power Query editor. So it is showing this data. So in this, I'll select this column, do right click, and here there is option called replace values. Once you click on replace values, I want to replace this dollar with nothing. Just like Excel में use करते हैं ना, find and replace same way. So find the dollar and replace with nothing. Click OK. Yes, it is removed. Another time, right click, replace values. Wherever you have the B, replace with nothing. See this B I written, replace with blank, click OK, but it is not replaced. How come? Why so? Capital. Absolutely. Excel is, I mean, Power Query is a case sensitive. Whether you are sensitive or not, this Power Query is a case sensitive. So remember this. So what do you need to do? Like a closer step which I did. One more time I'll do. Right click, replace values. I click on this B, I write this capital B and replace with nothing. Click OK. So it is replaced, but still it is a text. We learned that text is always left aligned. But if you want to convert to right align, or if you want to convert to number, you click on this data type. You see this data type currently it is ABC. ABC nothing but text, but you can convert to decimal number. Once you convert, yes, it is converted. ये number भी header भी change कर देंगे. Net worth बोल के लिखेंगे. So I click on this close and load. ये column को भी last में लगाएंगे बोले तो yeah, you can do this. You can drag and drop कर सकते हैं. कुछ भी कर सकते हैं. Yeah. और लाइक ये कॉलम मुझे जरूरत नहीं है, लास्ट चेंज YTD चेंज जरूरत नहीं है, राइट क्लिक रिमूव, ये सब चेंजेस कर सकते हैं. इससे पहले तो YTD चेंज भी था और लाइक टोटल नेटवर्थ यहाँ था सी कॉलम में, मगर अब लास्ट कॉलम में लगाने वाला हूँ. Once I click on close and load, you can see this, it is going to update with the new changes what we did. Earlier there was 7 columns, now it is showing the 6 columns only because one of the column is removed. And the total net worth here it is showing. Now if you want to do the sum of it, now you can write equal to sum. Why is writing the sum? You go here, table design, enable the total row, it will show the sum. नहीं तो आपको लिखना है तो बोलते लिखो, no problem. Sum of all this is the same 8297. Okay, but if it's a table, there is no need of summing or average. So you can just enable the total row.
Instead of sum, if you want to do average, click on drop down, select the average. But I want to go with the sum only. Is this clear, guys? Yes, sir. So within this, if you want to know country wise and total net worth and so on, you can insert the pivot table. You go here, insert pivot table. Let's say in the new worksheet, click OK, drag and drop से हो जाता है देखो. Like I'll select this country into rows and net worth into values. You see this Argentina कितना है, Australia कितना है, and so on. You scroll down, top 500 में देखो 50 बता रहा है. क्यों बोलते हो? United States itself is having so many billionaires. So there are so many duplicates are there. You see this United States is repeated so many times. So obviously in the top 500, you really don't have the top 500 unique billionaires. एक country में से एक को नहीं निकाले. So एक ही country में United States में बहुत जने billionaires है. India में भी है. Like this. Like if I go here, I call this as a data set. I call it as master data. And call it as a report. So ऐसा reports कर सकते हैं. ये देखो रो लेवल्स बोल के इतना करके रो लेवल्स दिख रहा है, अच्छा नहीं है. वो हियर रिपोर्ट लेआउट छोटे छोटे बातें टेक केयर करना है आपको. कंट्री वाइज टोटल नेटवर्क बता रहे हैं. इसमें इंडस्ट्री भी ऐड करना है, करो इंडस्ट्री को ऐड करो. सो ये ग्रैंड टोटल भी बता रहा है. नहीं इंडस्ट्री को मैं कॉलम्स में लगाऊंगा बोले तो कॉलम्स, नहीं तो फिल्टर्स में बोले तो फिल्टर्स. इफ आई सेलेक्ट दिस, यू सी हियर, इफ आई सेलेक्ट द कंज्यूमर, क्लिक ओके. कंज्यूमर में इंडिया नहीं है. आई क्लिक ऑन ड्रॉप डाउन, आई क्लिक ऑन दिस फिनांस, क्लिक ओके. यहाँ है इंडिया. And moreover, whichever is highest, that should show at top. Right click, sort, largest to smallest. Oh, United States is at top, China is second, India is at the fourth in the finance. If it is a energy, click OK. Oh, India is at top, United States is the second, and so on. So, like this, you can do this data analysis based sort to करके और click OK. So देखो India fourth position में, top 500 billionaires में India is in the fourth position. सर रैंकिंग भी दे सकते हैं क्या टेबल में? There, I go here, I click on this, double click on it. देखो लाइक इसको डुप्लीकेट कर दो, इसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ. इसको ये क्वेरी को डुप्लीकेट कर रहा हूँ. सेम क्वेरी डुप्लीकेटेड हुआ ना. इसको क्या बोलेंगे, टॉप 500 बिलियनर्स या टू बोल रहा हूँ इसको, सेम वाला टू. सो इसको क्या करेंगे बोले तो डू हियर ग्रुप बाय, क्लिक ऑन दिस ग्रुप बाय. लेट्स से एडवांस, इन एडवांस आई वांट टू डू country wise sum. I need to do sum on what column? Column called net worth, and the new column name is total net worth. If I click OK, it is giving me country wise total net worth. You can do the sorting, go here, make it descending order. United States is 1, China is 2nd, France is 3rd, and so on. But मुझे ranking देना है. बोले तो क्या है, United States 1 है, China 2nd है, France 3rd, India is at 4th. If you want to add that ranking, go to add column. Index column दिख रहा है ना, इसको click करो. Index column click कर देगी. United States 1 आना है, मगर ये index number 0 से start होता है. 0, China is 1, France is 2, and so on. China को मुझे 1 देखना नहीं है. So no problem. I close this. Add column में जाओ. Click on this same index column का drop down click करो. Instead of from 0, you click on the from 1. Nothing but it will start from the 1, ranking from 1, index number from 1. If you want to do some customization, it should start from 1 and 1, 1 and 2, 1 and 3, and so on. You can write it. But I'll go with the from 1. You can see this 1, 2, 3, 4. India is at the 4th position. So instead of index, you can rename this and you can call it as a rank. Enter. And you can move this one here, wherever you want. Go to home event, click on the close and load. We'll load it in the new sheet. So it is loaded the transform data. Understood this? Yes, sir. Let me share this files with you guys. पूरा फाइल शेयर कराऊँ, स्लो से डाउनलोड कर लो और LMS में भी अपलोड करो बोल के मैं बोलूँगा टीम को. We'll do that. So that's it from my end. Tell me guys if you have any queries.
Nothing. Have you downloaded the files? सर डाउनलोड हो रहा है. Yeah, करिए, no problem. Hello. So Excel is not this much only, guys. Like there are lot many things to learn in Excel. Keep learning it. सर बोले प्रशांत. सर ये वाली क्लास सर LMS पर आएगी? हाँ पक्का है ना. आना है ना. वो सर एक्चुअली क्या है ना कि पिवट टेबल वाली ऑलरेडी दिखा रही थी प्ले के लिए. नेक्स्ट वन इज डेटा क्लीनिंग. तो ये कल वाली क्लास और आज वाली क्लास ना इस वजह से आना है. आईडी आना है. Okay. अगर नहीं है तो सपोर्ट टीम को कैश करो. ओके सर. ये फाइल्स भी वहाँ अपलोड होना है. यस प्रज्वल, एनी क्वेरी? May I leave now, sir? Yes, please. Yes, please. Yeah. Thank you. People who are downloaded, like you can leave. So hope you learned a couple of things from the sessions. Give your valuable feedback. That matters a lot to me. हेलो सर. सर ये फाइल हमें उस मतलब साइट पे मिलेगी ना? Yeah, मिल जाएगा. LMS में मिल जाएगा. ठीक है सर, क्योंकि अभी मैंने मोबाइल पे ज्वाइन किया तो ये चेक करने में दिक्कत आ रही है. correct. Yeah, obviously. Yeah. तो आप उनसे करके अवेलेबल करवा दीजिए. LMS में मिल जाएगा आपको कल. हाँ सर, वही क्योंकि मैं अभी जब एक डाउनलोड किया ना तो मेरा सेशन आउट हो गया था, तो अभी मैं दूसरे डाउनलोड करने जा रहा हूँ तो मिल नहीं रही वहाँ पे. Yeah, correct. Yeah. सर फाइल इज डाउनलोडेड. Okay, great. ओके सर. गुड नाइट सर. अभी वो प्रैक्टिस करेगा तो ही क्वेरीज क्या है वो पता चलेगा. Absolutely, Pooja. Yeah. ओके सर. गुड प्रैक्टिस नाइट. करो. बहुत कुछ लाइक डेटा साइंटिस्ट के लिए, डेटा एनालिस्ट के लिए एक्सेल बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपको हुआ तो एक्सेल में सर्टिफिकेशन भी रहता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशलिस्ट बोल के. वो भी करिए. बहुत अच्छा रहेगा आपको जॉब सर्च करने में. ओके सर. हाँ गुड सर. नाइट सर. हेलो या गुड नाइट. यस यस सर, मैं ये प्लीज. कह रहा था जो अभी ज्वाइन है हमारे सभी स्टूडेंट, तो जिसके पास अभी ऑल फाइल है ना तो व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर देती थी, मिल जाएगा सबको वहाँ पे भी, अगर LMS पे जल्दी नहीं मिल जाता तो. मैं तो व्हाट्सएप में नहीं हूँ. नहीं सर, जो भी मतलब ये सुन रहे होगे ना, जो भी है ग्रुप में उनको पता है ना, तो शेयर कर देते ओके हैं. ओके ओके ओके. सर ग्रुप आप लोग का तो क्रिएट कर मुझे देना व्हाट्सएप मुझे ऐड ग्रुप. कर सकते हो क्या ग्रुप में? व्हाट्सएप में नहीं हूँ. सर एक काम कर दीजिए, लिंक शेयर कर दीजिए कमलेश के पास, जो कर या फिर मैं शेयर करता हूँ. मुझे भी ज्वाइन कर दो. मुझे भी ऐड कर लो. पहले मुझे भी बोले तो नहीं पता चलता ना उनको. हाउ यू नो दैट. या ऐसा करो नंबर और लिंक मुझे कैसे? भेज दो. लाइक मैं एवरीवन को शेयर करता हूँ. सो यू कैन कम्युनिकेट ईच अदर. यस सर. ओके सर. हाँ सर, मैं आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ, तो आप शेयर कर दीजिए जिसको ज्वाइन है वो. सर लिंक शेयर किया है आपको. देखा हूँ. बट मेक श्योर दैट लाइक योर make sure you don't misuse this links guys. like पर्सनल विंडोज में मैसेज नहीं करना. कुछ भी करे तो व्हाट्सएप में कर लेना. या स्पेशली गाइस यू शुड बी वेरी केयरफुल. प्रशांत मुझे और एक लिंक भेजिए क्या? हाँ सर, ग्रुप में 2 लिंक थी तो सर एवरी टाइम लिंक का वो जो एड्रेस है वो चेंज होता है क्या? कौन सा लिंक? क्योंकि ग्रुप में कमलेश ने 2 लिंक भेजी है, पहले ऊपर एक थी नीचे, जो भी वो दोनों भी शेयर कर दीजिए, जिससे जाना हो जाएगा. हेलो सर. Okay. हेलो सर. या बोलो बोलो. सर सुन रहा हूँ. ग्रुप का नेम ग्रुप का नेम तो एडोनिक स्पॉट दिखा रहा है सर. कौन सा ज्वाइन करना है सर? मुझे नहीं मालूम है. व्हाट्सएप ग्रुप में रहते हो नहीं लाइक सर क्या सर शायद बोलते हैं. नीचे वाली होगी जो मैंने सेकंड टाइम भेजी ना, वो ओके होगी लेट मी ट्राई हाँ दिस. ठीक है. है ठीक है, मिल गया. मिल गया ना. So guys, have you downloaded the link? Sorry, have you downloaded the files? Yes sir. Okay. Oh, what is the name it's showing? Like is it official group guys? Official group of the Avionics? No Sir, No sir. it's official only for students. Oh, okay. It's only for our communication. Understood. What the previous one? Previous link भी same है क्या?
Okay, fine, yes. Ideally, I should not supposed to share this one, but for your convenience, I did it. Do practice, do well. All the best for your job, IJBs. So utilize this training, whatever we given, and do practice well. Okay, thank you all. Okay, Sir, sir. can I Yeah. We all are leaving now. Okay, bye, guys.